Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है. ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 28. Topic is talking about discipline. आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के ताल्लुक से जिससे इंसान की ज़िंदगी नुमायाँ होती है और एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी होती है. डिसिप्लिन जिसका तर्जुमा नज़्म ज़ब्त ही होता है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में, आज वो सीखने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं: पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें दिए गए मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना होती है. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था. अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाकर के ज़रूर देख ले. लेट्स मूव टू सेक्शन 1, पावर वर्ड्स. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अच्छे अच्छे अल्फाज है, हम इनको देखेंगे, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इनको लाने की भी कोशिश करेंगे. मेरे साथ साथ दोहराइए. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मुसलसल मिजाजी. सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन खुद को काबू में रखना. कमिटमेंट, कमिटमेंट वाबस्तगी, पुख्ता इरादा. पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी वक्त की पाबंदी. रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट खुद पर काबू. अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदही. रूटीन ड्रिवन, रूटीन ड्रिवन रूटीन के तहत चलने वाला. स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड मुनज़्ज़म. सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग खुद निगरानी. मीनिंगफुल, मीनिंगफुल माना खेज. इनर कंट्रोल, इनर कंट्रोल अंदरूनी ज़ब्त. लॉन्ग टर्म फोकस, लॉन्ग टर्म फोकस तवील मुद्दती तवज्जो. तो आप इन अल्फाज को ज़हन में बिठाइए, इनको रोज़मर्रा की गुफ्तगू में यूज़ करने की कोशिश कीजिए. लेट्स मूव टू द सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ अच्छे अच्छे जुमले हैं, इनको आप दिमाग में बिठाइए, मेरे साथ सब दोहराइए. डिसिप्लिन हेल्प्स मी स्टे कंसिस्टेंट इन माय डेली एक्शंस. डिसिप्लिन हेल्प्स मी स्टे कंसिस्टेंट इन माय डेली एक्शंस. नज़्म ज़ब्त मुझे अपने रोज़ाना के कामों में मुसलसल रहने में मदद देता है. आई बिलीव सेल्फ रेगुलेशन इज़ मोर पावरफुल देन मोटिवेशन. आई बिलीव सेल्फ रेगुलेशन इज़ मोर पावरफुल देन मोटिवेशन. मेरा मानना है कि खुद पर काबू पाना हौसले से ज़्यादा ताकतवर होता है. बीइंग पंक्चुअल शोज सीरियसनेस एंड रिस्पेक्ट. बीइंग पंक्चुअल शोज सीरियसनेस एंड रिस्पेक्ट. वक्त की पाबंदी संजीदगी और एहतराम को जाहिर करती है. कमिटमेंट कीप्स मी फोकस्ड इवन व्हेन आई फील टायर्ड. कमिटमेंट कीप्स मी फोकस्ड इवन व्हेन आई फील टायर्ड. वाबस्तगी मुझे थकन के बावजूद मरकूज रखती है. आई ट्राई टू मेंटेन रिस्ट्रेंट इन माई वर्ड एंड एक्शंस. मैं अपनी बातों और कामों में ज़ब्त रखने की कोशिश करता हूँ. अकाउंटेबिलिटी मेक्स मी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन चॉइसेस. अकाउंटेबिलिटी मेक्स मी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन चॉइसेस. जवाबदही मुझे अपने फैसलों का जिम्मेदार बनाती है. Self monitoring helps me correct my mistakes early. Self monitoring helps me correct my mistakes early. खुद निगरानी मुझे अपनी गलतियां जल्द दुरुस्त करने में मदद देती है. Discipline teaches the art of delayed gratification. Discipline teaches the art of delayed gratification. नज़्म ज़ब्त मुझे फौरी फायदा छोड़कर सब्र करना सिखाता है. Inner control allows me to stay calm in difficult situations. Inner control allows me to stay calm in difficult situations. अंदरूनी ज़ब्त मुझे मुश्किल हालात में पुरसुकून रखता है. I avoid distractions to maintain long-term focus. I avoid distractions to maintain long-term focus.
میں طویل مدتی توجہ برقرار رکھنے کے لیے توجہ بٹانے والی چیزوں سے بچتا ہوں. Small disciplined actions create big results over time. Small disciplined actions create big results over time. چھوٹے منظم اقدامات وقت کے ساتھ بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں. Without discipline, talent alone is not enough. Without discipline, talent alone is not enough. نظم و ضبط کے بغیر صرف صلاحیت کافی نہیں ہوتی. تو ان سینٹنسز کو آپ مختلف موقعوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھے اچھے سینٹنسز ہے, دماغ میں بٹھا بھی سکتے ہیں ان کو. لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک, اور ٹاپک ہے ڈسپلن ان مائی لائف. ایک پیراگراف بھی ہے اسی عنوان پر, بہت ہی آسان ہے اور مختصر ہے, اس کو ذہن میں بھی اٹھا سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ بھی کرتا ہوں, اس کا ترجمہ بھی کروں گا. ڈسپلن plays a central role in shaping my daily life. I believe real discipline comes from inner control rather than external pressure. I try to follow a structured routine that helps me manage my time and energy wisely. Even on days when motivation is low, commitment keeps me moving forward. Discipline has taught me the value of delayed gratification and long-term thinking. I avoid unnecessary distractions so I can stay focused on meaningful goals. Being accountable for my actions has improved my decision making. Self-monitoring allows me to correct my habits before they turn into problems. Over time, I have realized that discipline brings peace, clarity, and self-respect. A disciplined life may look strict, but it actually creates freedom and confidence. ایک مرتبہ ذرا اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں میں. نظم و ضبط میری روزمرہ زندگی کو ترتیب دینے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے. I believe, میرا ماننا ہے کہ اصل نظم و ضبط بیرونی دباؤ سے نہیں بلکہ اندرونی ضبط سے آتا ہے. I try to follow a structured, میں ایک منظم روٹین اپنانے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے وقت اور توانائی کو بہتر طریقے سے سنبھالتی ہے. Even on days when motivation is low, جب حوصلہ کم بھی ہو تب بھی وابستگی مجھے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. Discipline has taught me the value of delayed gratification. نظم و ضبط نے مجھے صبر اور طویل مدتی سوچ کی اہمیت سکھائی ہے. I avoid unnecessary distractions. میں غیر ضروری توجہ بٹانے والی چیزوں سے بچتا ہوں تاکہ اپنے مقصد پر قائم رہ سکوں. Being accountable for my actions. اپنے اعمال کی جواب دہی نے میرے فیصلوں کو بہتر بنایا ہے. Self monitoring allows me to correct. خود نگرانی مجھے اپنی عادتیں مسئلہ بننے سے یعنی پریشانی بننے سے پہلے درست کرنے کا موقع دیتی ہے. Over time I have realized, وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ نظم و ضبط سکون, وضاحت اور خود اعتمادی لاتا ہے. A disciplined life may look, نظم و ضبط والی زندگی سخت نظر آتی ہے یا آ سکتی ہے مگر دراصل یہ آزادی اور اعتماد پیدا کرتی ہے. So 3 sections you have seen on the same topic. ایک ہی ٹاپک کے تحت اپنے تینوں سیکشنز دیکھے. Now it's challenge time. Now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic discipline in my life in front of the mirror if you have. آپ کو بھی اسی ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے. 1 منٹ کیجئے, چاہے تو 2 منٹ, چاہے تو 3 منٹ, بٹ گفتگو ضرور کیجئے. ٹھیک ہے. Excellent. You have completed day 28 of your 40-day English speaking challenge. آپ نے 28واں دن بھی مکمل کر دیا. بہت ہی خوب, انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو. Keep speaking, keep practicing. فائدہ تو ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے, پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو اس پلے لسٹ پر کلک کریں, پچھلے اسباق میں موجود ہے. آپ ایک ایک کر کے تمام اسباق بھی دیکھ سکتے ہیں.
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.